It's been a rough morning for commuters in suburban Mumbai after an electric line from Thane to Diva snapped, causing delays that led to angry commuters staging a rail roko protest that in turn provoked a police lathi charge. All of this afternoon, all lines except the central line from Thane to Diva were functional. Motormen have called off their strike on an assurance from the government that they will be given additional security. This after protests turned violent at several stations, with angry commuters pelting stones, setting vehicles on fire at Diva. Trouble in fact started at 7 in the morning. Services were down for about 5 hours, but the situation is slowly returning to normal. Both the central and the state governments have gotten into damage control mode and have also promised to examine demands for increasing traffic on that route. After the stone pelting and rail roko at Diva station, now motormen are afraid. They want security. They are saying that we want security, otherwise we will not start the service. I'm joined by the motormen here. सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ फिलहाल की जो परिस्थिति है और आपको क्या सिक्योरिटी चाहिए, किस तरह का डर? पहले थोड़ा सा करेक्शन है, गाड़ी बंद नहीं की हम लोगों ने, कोई गाड़ी बंद अपने आप हुए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्या दिवा में जब आंदोलन होगा गाड़ी नहीं आएगी तो गाड़ी बंद होगी। वो तो पब्लिक ने आंदोलन करके गाड़ी रोके। हम लोग दिन रात मार खा के, अभी हमारे 2 मोटरमैन गार्ड मार खा के खून बहा के गाड़ी ले आने के काम किया सुरक्षा के साथ में, तो हम लोग गाड़ी चलाते हैं। अभी लोग डरे हुए हैं, जो डरे हुए मोटरमैन और गार्ड कहेंगे कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, कोई गलत बात है तो उनको सिक्योरिटी दे रहा है, गाड़ी जा रही है। लेकिन आप लोगों से मेरा विनती है भाई, थोड़ा सा आप यात्रियों को, पब्लिक को ये बताइए, इस तरीके से कोई दुर्घटना होने पर कोई मोटरमैन की मारना, गार्ड को मारना, रेल कर्मियों को मारना, ये इससे कोई समाधान नहीं होगा। आपका काम है कि हमारे मोटरमैन गार्ड को सुरक्षा देना। एक आरपीएफ से हमारा सुरक्षा नहीं होगा, एक जीआरपी से हमारा सुरक्षा नहीं होगा। यही हर रोज हम ले जाने वाला वही लोग हमारा सुरक्षा है, वही हमारे कॉन्फिडेंस है। इसको लेकर के आपने कोई स्ट्राइक पे जाने का सोचा था कि मोटरमैन? कोई स्ट्राइक में जाने का कोई फैसला हुआ नहीं है। थोड़ी देर के लिए डराव था लोगों के दिल में और दिमाग में। हमारी मोटरमैन गार्डों ने कहा कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी दी गई। आप देख रहे हैं कि चारों ओर आरपीएफ खाकी वर्दी के लोग खड़े हैं, वो साथ दे रहा है, साथ में जा रहा है। गाड़ियां जा रही हैं, प्लेटफॉर्म पर एक भी गाड़ी नहीं है, सब जा रही है। तो अभी ये गाड़ियां किस तरफ, सेंट्रल लाइन की थाने तक जा रही है या फिर दीवा तक पूरी तरह से सिस्टम शुरू हो गया? पूरी तरफ शुरू हो गया, लेकिन उसके लिए समय लगेगा मैडम। कभी भी कोई गाड़ी बंद हुआ तो उसको शुरू होने के लिए उसको थोड़ा सा समय लगता है। तो सेंट्रल रेलवे ने आपको सिक्योरिटी देने की बात की है? दे रही है, बात नहीं, दे रही है, सिक्योरिटी मिल रहा है अभी हमको। Thank you so much. So now the motormen are saying that they have got the security from Central Railway, and because of that now the service will start. In fact, the service is going on now from CST to Thane and also to Diva also. With cameraman Ganesh, Amrita Shedgi in Mumbai for headlines today. यहाँ से थाने तक की ट्रेनें चल रही हैं, कल्याण से आगे की ट्रेनें चल रही हैं। थाने कल्याण अफेक्टेड था, अभी टेक्निकली सब कुछ ठीक है। एक पहली ट्रेन चल गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी देर में बाकी ट्रेनें भी चल रही हैं। मोटरमैन्स कोई स्ट्राइक पे नहीं जा रहे हैं। मोटरमैन्स ने एक अपना जेन्युइन एप्रीहेंशन बताया था हम लोगों को कि उनको एस्कॉर्ट दे दिया जाए। आधा घंटा करीब सीएसटी में देरी हुई थी और हम लोगों ने एस्कॉर्ट सबके लिए बंदोबस्त किया हुआ। And our correspondent Amrita Shedgi is with us live from Mumbai this afternoon. Amrita, train services been resumed, but commuters still extremely angry over delays that they suffered this morning. Sivi, yes, the commuters are still angry. I'm standing at Chhatrapati Shivaji Terminus where the trains have started. The service is on from Chhatrapati Shivaji Terminus to Thane, but not beyond Thane till Diva. The service is still not on towards Diva, because we have seen in the morning also there was rail roko at the same station, there was stone pelting at the same station, and because of that the service from Thane to Diva is still affected. For more than almost 5 hours now the service is affected. But in a CST station we can see that there is also the crowd is increasing at Chhatrapati Shivaji Terminus, though the trains have started on Central Railway from Chhatrapati Shivaji Terminus to Thane, but entire service is running very slow, and because of that the crowd is increasing. Also police has given security to this station. We can see that there is huge police force standing on Chhatrapati Shivaji Terminus, and some commuters are still waiting for their trains. Some commuters are still sitting here at CST at Chhatrapati Shivaji Terminus. They are waiting for their trains because the entire service is working very slowly. Now also the trains have started, but they are running slowly. We just spoke to the motormen. They are saying that we have got security, and because of that, after getting security, they will be taking their positions and they'll be starting the service.
But yes, the service is entirely affected. The entire service is going very slowly. All right, things are slowly returning back to normal. Amrita, I want to ask you if a case has been registered against persons who pelted stones at trains and vandalized public property. There is no such information from police or from railway authorities whether the case is registered or not, because that was a huge mob. If we talk about Thane station, if we talk about Kalyan station or Diva station, these are the big stations, and that was a morning time. At around 7 a.m. in the morning, the overhead wire broke, and after that this entire incident took place. But because the mob was there, the mob was angry, the stone pelting happened. Also, there was some other serious issues also. 2 motorbikes got injured also in that entire incident. But now there is no such information whether the case is registered or not. Still on Diva station, still on Thane station, police is giving security. GRP is on the spot, and also the crowd is still there, but the service has somewhere started from CST to Thane. All right, Amrita, thanks so much for that update. We're going to keep coming back to you for more.